Hello, Mathujiman. You're watching Northeast Express on HornbillTV. In a strong display of environmental activism, more than 200 people, including political leaders from various parties, students, senior citizens and members of the Shilpi Samaj, formed a human chain in Guwahati's Tikali on Saturday to protest against deforestation in the name of development. The protesters raised concerns over the Assam's government alleged plans to fell decades-old trees for a flyover project. They urge authorities to pursue development without compromising the environment, chanting slogans like "Do development, don't destruct," and holding placards bearing environmental messages. The protest saw participation from people across different walks of life. Protesters sang songs, shouted slogans against the state government, and demanded immediate action to hold the tree cutting activity. Environmental groups claim that over 100 trees, many of them over several decades old, are at risk of being cut down if the flyover project moves forward. They also warned that the removal of green cover has already contributed to the rising temperatures in the city. Speaking to the media, one protester said the government must understand and respect both the people and nature. They had earlier assured the court that they would not cut down or translocate trees, but now they have gone against their own commitment. The flyover was supposed to end at a different location away from this area, but now they have extended the project and are targeting this green zone. We will continue to oppose this. As of now, local authorities have not issued any official response regarding the protest of the concerns raised by the demonstrators. असम सरकार के द्वारा डेवलपमेंट के लिए या फ्लाईओवर बनाने के लिए जो पेड़ की कटाई कर रही है, उसके लिए गुवाहाटी के सिटीजन इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स, स्टूडेंट्स निकल के आए हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एकजुट हुए हैं। ह्यूमन चेन एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, इतने सारे लोग एक साथ आकर के पेड़ की कटाई की अगेंस्ट में ये लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हमें डाटा से थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इससे भी पहले बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट किया, पॉलिटिकल लीडर हो या आम आदमी हो, प्रोटेस्ट किया, लेकिन सरकार सुना नहीं। अभी आप क्या करेंगे? See, that is the problem. You see, now everybody understand what is global warming is. See, if a plant is alive, then the human race is alive. It is very simple logic. Everybody understand, but one man, he doesn't understand, and he is the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sharma. He doesn't bother anyone, and whatever he thinks it is right, and he just go as a demolition man. लेकिन सिटी को सजाने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ पेड़ को काटना भी पड़ सकता है, इसमें आप क्या कहेंगे? No, वो तो डेफिनेटली सिटी को बसाने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए तो ये सही है। साथ साथ ये जो ह्यूमन रेस, इसको जिंदा रहने के लिए भी ये प्लांट्स रहना जरूरी है। और कुछ पेड़ों को रिलोकेट करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, वो क्या जिंदा बसेंगे, नहीं बसेंगे, क्या? सी रिलोकेशन ये जो है इन अदर कंट्रीज, हम देखा चाइना और अदर कंट्रीज में ये रिलोकेशन होता है, लेकिन हाँ असम में आई थिंक ये पहले बार ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये कितना कामयाब होगा या नहीं होगा, ये इससे एक बड़ा डाउट है। हाँ, सो एंड रिलोकेशन के लिए भी वो 50% ऑफ द प्लांट्स वो कटाई किया है, तो इसका क्या मतलब रह गया रिलोकेशन का? और बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग अगेंस्ट में आ गए हैं। तो सरकार जो काम कर रहे हैं, ये जो पेड़ की कटाई चल रही है, निसर्ग को विनष्ट कर रहे हैं, लोगों को कहना है, और भी डाला से भी बात करते हैं। तो आप लोग ये ह्यूमन चेन जैसा एक प्रोटेस्ट करने लगा, और असम
सरकार आप लोगों की ये जो ह्यूमन्स हैं आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोगों की बातें सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। सरकार को हम लोग सुना है, तो हम लोग का बात वो सुनना पड़ेगा। नहीं सुनने से नहीं होगा। उसको आज उन्होंने भी सरकार वार्निंग दिया है। आज इतना जनता खड़ा होकर रोड में, ये उसको सुनना पड़ेगा हम लोग का बात। बस कितना जो करा है वो he should stop it and he should plan tree. That is our only demand, nothing else. तो ये इन लोग को कहना है कि सरकार को ज़रूर सुनना चाहिए, और सरकार नहीं सुनेंगे तो वो लोग इससे भी बड़े पैमाने पे वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आइए थोड़ा आगे मैं दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि आदमी का बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर का साथ साथ स्टूडेंट्स और गुवाहाटी के जो सिटीजन्स हैं सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं पेड़ की काटने के विरोध में। आइए माइडो से भी जानते हैं। आप लोग पहले भी आप लोग को देखा गया कि इस तरह के प्रोटेस्ट किया था पहले भी, लेकिन सरकार नहीं सुना। लेकिन अभी आप लोग फिर से ह्यूमन सेंस जैसा एक प्रोटेस्ट। अभी हम लोग का जो गवर्नमेंट है असम में, बीजेपी गवर्नमेंट, जो सीएम है वो तो अपना ही सुनता है, किसी और का नहीं सुनता है। अभी आज हम लोग यहाँ में इकट्ठे हुए हैं इसीलिए जो पेड़ सब काट रहे, नेचर को ख़त्म कर रहे वो लोग। नेचर को ख़त्म करके कोई डेवलपमेंट नहीं होता। ये छोटा छोटा बच्चा भी, उन लोग को भी पता है, लेकिन नेचर को ख़त्म करके कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। आज का जो असम में डेवलपमेंट है वो एक ही काम, एक ही है उसका, एक ही मतलब है, मतलब मुनाफा। जो कमीशन राज है वो कमीशन राज है। कमीशन राज के बेस पे वो लोग हर जगह में ब्रिज बना रहे हैं। अभी गुवाहाटी सिटी में ब्रिज बना रहे हैं और ब्रिज के कारण वो लोग सब पेड़ काट रहे हैं, गाछ ये सब काट रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है आप डेवलपमेंट कीजिए, डेवलपमेंट सबको चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि नेचर को ख़त्म करके आप लोग डेवलपमेंट कीजिएगा। ये अगर नेचर नहीं रहेगा तो मानव जाति का क्या होगा? इसीलिए हम लोग हाँ, प्रोटेस्ट का जो मेन थीम है कि इन लोगों का कहना है कि नेचर को ख़त्म नहीं करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे जो पेड़ की कटौती चल रही है इसको रुकना चाहिए। मैं गुवाहाटी से नकुल संडराभा, हॉर्नबिल। The Dorbar Snong of Sangling has been compelled to immediately shut down the village dumping ground located in Nongpo due to the overwhelming stench caused by the indiscriminate disposal of waste. The foul smell had become so severe that it reached nearby homes, making it unbearable for residents who were forced to eat their meals amid swarms of flies with no means of protection. The Sangling Village Council has completely sealed off the dumping ground for the past 3 consecutive days. This closure has created significant difficulties for surrounding villages and markets in Nongpo town, as they are now left without a designated area to dispose of their waste. The village has barred further dumping in the Sliang waste site situated within the Nongpo area. In response to the public hardship caused by the unbearable odor, the Sianchokki Rangpang Snyong Federation of Village Headmen, representing 8 villages under the Bahamrio Circle along with the Sangling Village Council, conducted a site inspection. Their finding confirmed that the manner in which waste has been disposed of was highly improper, resulting in a pervasive stench and a proliferation of flies of various kinds. This situation has raised serious concerns regarding public health and hygiene, as well as food and water safety for the residents. The inspection team was led by Stianchuk Chairman Stephen Siar, Sangling Village Headman James Moyeng, Village Secretary Vincent Shokwai, along with other members of the Federation and local villagers, including men and women from Sangling. Apo kitli charo daptang uni majong bawan kumbalang hani kuni uni dire ern esu chaju tu boy ba kapeleng te itu te hakacaga juro ba dacet menit men step yo ba bam Pancu yatu yapi dang menin janmit entang ngila perlong ya kajing eki ngila yo ya kataga siti ba lasngi ningkong na kaliang gibor badai pen kin sawan mi hangne le ya kataga site visit endal adap ke site visit en sa penlong pat ya ka meeting hadisi office conference hall kabapan lengo yangi barok si kata kumbalaong mene sai pija batat muntagasngi na ka ngidon hangne kaliang ga Dorbar Snong Sangling kumju ro ki nong song snong jong ka snong Sangling na gilong kmi gilong pa ki kum samla jong ka snong ta kane ka por ngidon ro chairman jong ka senjuk prasnong jongi ba Stefan Kiar ngidon ro hangne rang ba snong jong ka paham ri olum ngidon ro
Nikong nakaliang kajonga kumusurman jong di pratli ki dor barsnong niwan hangne ban ai ya kajing kersian halor kesenjam kabaga dor barsnong sangling kesim ha kabidi bat kene kajaka tenyot mo kajing sma jong kene kajaka kene kesinong sangling la di kawei kabapen du tia du dem yaki kabapen lang a pisa yaki khamtam mentah ke perliur ke perslam ki katno kajing jabo jong kene ka jaka mat PUE hadu katno uskan uboy. The Teachers Recruitment Board Tripura TRBT has firmly stated that no changes will be made to the final answer keys released for TET Papers 1 and Paper 2 exams. Chairman Pratyush Ranjan Deb clarified that TRBT follows a standard procedure and according to existing rules, revisions to the final answer key are not permitted. Deb explained that after the exams, tentative answer keys are published and candidates are allowed to challenge any questionable answers by submitting valid sources. These challenges are reviewed by subject experts whose decisions are final. Based on their evaluation, changes are made if necessary and then the final answer key is released. TRBT, as the conducting authority, has no power to after this key once finalized. He added that some student challenges had been accepted earlier, resulting in minor modifications. However, TRBT cannot make further changes beyond that. না এটা আমি একটু আপনাকে বলি আপনি ওই যে আমি পরীক্ষাগুলোর কথা বললাম নিট যেই সমস্ত পরীক্ষাতে আপনি দেখবেন প্রশ্ন চ্যালেঞ্জ হয় সেখানে উত্তরও পরিবর্তন হয় ডাক্তারের জন্য যে নিট পরীক্ষা হয় ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যে জেই পরীক্ষা হয় বা সেন্ট্রাল টেট যে পরীক্ষা হয় সেক্ষেত্রেও প্রতি বছর টেন্টেটিভ আনসার কি দেওয়ার পরে প্রচুর অভিযোগ পড়ে এবং ফাইনাল আনসার কিতে দেখা যায় যে 5টা 7টা 10টা করে পরিবর্তন হচ্ছে এটা সেন্ট্রাল টেটের ক্ষেত্রে 15টা প্রশ্ন পরিবর্তন হয়েছে নিটের ক্ষেত্রে 11টা প্রশ্ন পর্যন্ত উত্তর পরিবর্তন হয়েছে এগুলো সমস্ত পরীক্ষার ক্ষেত্রেই হয় আমাদের বোর্ডে যে 2015 সাল থেকে পরীক্ষা হচ্ছে সেখানে 15 সাল থেকেই কিন্তু দুটো তিনটে করে এই রকম প্রশ্নের ক্যান্ডিডেটদের ফেভারে যাচ্ছে উত্তর এটা নতুন কিছু নয় এটা সর্বভারতীয় পরীক্ষাতে এটা হয় হয়তো যেহেতু এটা চাকরির পরীক্ষা বা নিট ডাক্তারি পরীক্ষাটা উচ্চ স্তরের পরীক্ষা সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন থাকে যেটা হয়তো অনেক রকম ভাবে তার উত্তর হতে পারে এইটা যখন সাবজেক্ট এক্সপার্টরা 2-3 জন মিলে বিবেচনা করেন তখন অরিজিনালি যিনি পেপার সেট করেছিলেন তার থেকে সাবজেক্ট এক্সপার্টদের মতের পার্থক্য তৈরি হতে পারে ম্যাডাম এবং চেয়ারম্যান স্যার ব্রিফ করলেন ব্যাপারটা আমাদের টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ত্রিপুরা পরীক্ষা নেই আমাদের পরীক্ষা দুই ধরনের কিছু পরীক্ষা হয় যেগুলোকে আমরা বলি সিলেকশন টেস্ট আর আমাদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হচ্ছে টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট বা টেট টেটের নাম হচ্ছে টি-টেট টি-টেটের দুইটা পর্যায়ে হয় পরীক্ষা একটা হচ্ছে পেপার 1 চেয়ারম্যান স্যার যেরকম বললেন ক্লাস 1 থেকে 5 পর্যন্ত যারা পড়াবেন যারা টিচার হবেন তাদের যোগ্যতা নির্ধারণকারী পেপার 1 এবং আরেকটা হচ্ছে পেপার 2 টি-টেট পেপার 2 যে টি-টেট পেপার 2 যারা কোয়ালিফাই করবেন তারা 6 to 8 এই ক্লাসগুলোর টিচার হবেন তো আমাদের পরীক্ষা এই যে টি-টেট 2024 এই পরীক্ষার নোটিফিকেশন আমরা করেছিলাম 16 ডিসেম্বর 2024 সালে এই কারণে পরীক্ষাটার নাম হয়েছে টি-টেট 2024 তো আমাদের পরীক্ষার যে সিস্টেম টিআরবিটি যে সিস্টেম ফলো করে স্যার যেরকম ভাবে বললেন অন্যান্য যত সব পরীক্ষা গ্রহণকারী সংস্থা ভারতবর্ষে আছে স্ট্যাটিউটরি সংস্থা ভারতবর্ষে আছে একই রকম ভাবে আমরা টিআরবিটিতেও ওই অন্যান্য সংস্থাগুলোতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় একই পদ্ধতিতে আমরা পরীক্ষার নোটিফিকেশন হয় বাই দিস টাইম আমাদের এমপ্যানেল সাবজেক্ট পেপার সেটাররা আছেন বিভিন্ন সাবজেক্টের সেই পেপার সেটারদের আমরা নিযুক্তি দেই আমাদের এমপ্যানেল মডারেটররা আছেন এবং আছেন সাবজেক্ট এক্সপার্ট
Chief Minister Kurnath K. Sangma on Friday launched a district nutrition challenge during the district nutrition leadership workshop held in Shillong, organized by the Human Development Council of Meghalaya. The intensive two-day workshop aimed to tackle one of the state's most urgent issues, nutrition for mothers and children. Through this initiative, each district will now set clear and measurable goals to improve critical human development indicators. The workshop spotlighted key focus areas including enhancing child nutrition, promoting exclusive breastfeeding, reducing anemia rates and increasing access to local food solutions through decentralized community-driven programs. Describing the program as a transformative step, Chief Minister Sangma emphasized that the initiative represents a unified effort to accelerate progress towards achieving Meghalaya's sustainable development goals by 2030, particularly in ensuring better nutritional outcomes and advancing overall human development. When we started our tenure in the first term as MDA government, we were very clear. We need to set our goals. We need to set our targets. We need to know what it is that we want to achieve, how we're going to achieve it, and by when we're going to achieve it. How can we convert this goal of economic growth into equity? How can we involve that this growth will also lead to social good for the people? And that's when we started working on all of these things. I don't want to go too much into detail, but that's how it started. The second thing we realized, of course, was that we were always focused a lot on schemes. And I think all of you must be, at some point or the other, always pushed with targets. So the irrigation department is always told, finish your 10 kilometers of irrigation canals, 15 kilometers of irrigation canals, and you'll find the irrigation department working day in and day out, trying to finish that irrigation canal. And if you ask the engineers and officials from the irrigation or now the water resource department that what is your goal, they will tell you our goal is to create 10 kilometers of irrigation canal. But the question is that the actual goal? It's not. The actual goal is to ensure that the irrigation canals lead to increase in agriculture production. So what happens in our system is we are so focused on our day-to-day, numbers and goals and the schematic system that we have, that sometimes we just forget the larger picture of what is it that we are actually trying to achieve. And therefore, I think it's so important that we keep reminding ourselves about that purpose. I heard the videos mention this, that it was a purpose-driven. It's a very, very common word we use, but it's so important to remind yourself, what is that purpose? What are we trying to achieve? Is it the visits that we make to the villages that's important? Or the action we take after the visits that we make in order to be able to then save a child's life or improve a child's health? And somewhere along the line, because we are so busy, and all of you are extremely busy, we tend to forget that. So there's a second point that we are very, very, very particular about, that it has to be purpose-driven, it has to see the stakeholder in front. Why do you think we have a youth budget? Why do you think we present a women's or a gender budget? Why do we present an environment budget? It's not that we want to present, a gender budget or a youth budget, but we want to give you the picture that at the center of what we are trying to do, it is the youth of our state. It's not just the sports department, it's not just the education department, it's not just the social welfare department, it's not just the entrepreneurship programs that we're having, it's not just the music programs we're having, it's not just the student exchange programs we're having, it's not just the Meghalaya Games we're having. All of these programs is centered around the youth. And the same for the farmers. When you do anything for irrigation, for farmers, irrigation is important.
Food and Civil Supplies for this, Farmers Program, Agriculture Department is important. The different work that goes on in horticulture, the veterinary department, the water resource department, all of these are connected. Why do we have the Council for Climate Change? Because you talk to water resources, they talk about protecting the trees and the water's bodies. You talk to soil conservation, they talk about protecting the water and the water bodies and the forest cover. You talk to forest department, they mention about the forest cover. You talk to mining department, they'll talk about rehabilitation of the entire mine locations. You'll talk about the SPVs under the SPV for cement plant. Lafarge SPV, it's the same thing they're having. Triple MCR money collected, same thing. The EAPs that we are having from so many departments, so many ministries, the same thing. But the funniest thing is, they never talk to each other. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.